everyone, so today we are going to study about the very interesting topic of pharmacology, that is skeletal muscle relaxants. Now what are skeletal muscle relaxants? As in the names, it is muscle relaxant. So these are the drugs or agents that have muscle relaxing properties. Now whenever there comes the muscle word, we know there are two phenomena. One is the contraction and other is the relaxation. So these skeletal muscle relaxants are the drugs that uh, relaxes it causes the relaxation of skeletal muscles by inhibiting the contraction. If the contraction is inhibited, then the muscle relaxant property is shown up, and they simply work on blocking the neuromuscular junction. So these skeletal muscle drugs or agents block the neuromuscular junction, which causes the inhibition of contraction and leads to the muscle relaxation. Okay, so now let's study about the definition. So the drugs that are acting peripherally at the neuromuscular junction, muscle fiber itself, and centrally in the cerebrospinal axis is known as the is are known which to be decreases the muscle tone and causes paralysis, are called as skeletal muscle relaxants. Now skeletal muscle relaxants simply कैसे define करेंगे कि they are peripherally at neuromuscular junction, muscle, they act on muscle fiber itself and in the centrally acting cerebrospinal axis, which decreases the muscle tone and causes paralysis. Now these are the relaxants which are used in the treatment of muscle spasm and spasticity. Now what is muscle spasm? As you can see the image here, muscle spasm जो होता है, this is due to मसल स्पाज्म का सिंपल वर्ड है मसल क्रैम्प और इट इज ऑल्सो नोन एज चार्ली हॉर्स. ठीक है, सो मसल क्रैम्प जो है दिस इज a involuntary or forceful contraction of muscles. This can occur due to dehydration, electrolyte imbalances, muscular tension, overuse of the muscle, increased demand of the blood flow, and sometimes underlying medical conditions like your atherosclerosis, nerve compression, and neurodegeneration. Due to these factors, now muscle spasm or muscle cramps, this occurs mainly due to this specific reasons, and it also occurs due to the extreme exercising, or there is an extreme workout. So many a times athletes or sports personalities or various gym personalities go through this muscle cramps. This is very common in common people also, okay, due to the underlying conditions. Now spasticity जो होता है, this is the decreased blood flow to the part of the body. So suppose if you are walking and if you bang your elbow to the door, there are certain nerve sensations going on in your hand. Now this occurs why? This is known as spasticity. This occurs due to there is a blocking of there is a nerve block due to which this sensation occurs and you may feel like a current. Now these relaxation agents are mainly used for surgery. Now surgery may, if the person is to be operated, so in that period of time he or she needs to be the all the muscles should be in the relaxed phase rather than the contracted phase. So these are the uses of this drugs. Now let's study about the classification. So these centrally acting and peripherally acting muscle relaxants, so it decrease, centrally acting जो होता है ये मसल टोन को डिक्रीज कर देता है और वॉलंटरी एक्शन को रिड्यूस करता है विदाउट रिड्यूसिंग वॉलंटरी पावर, यानी वॉलंटरी पावर को कोई हार्म नहीं होता बट मसल टोन डिक्रीज हो जाता है. बट पेरिफेरली एक्टिंग में मसल पैरालिसिस हो जाते हैं और मसल वॉलंटरी मूवमेंट्स जो है ये लॉस हो जाते हैं. अगर मसल पैरालिसिस होगा तो वॉलंटरी मूवमेंट्स लॉस हो जाएगी. सेंट्रली एक्टिंग में वॉलंटरी मूवमेंट्स को कुछ नहीं होता, बस मसल टोन डिक्रीज हो जाता है. नाउ पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर यहाँ पर इनहिबिटेड, बट यहाँ पर पेरिफेरली एक्टिंग में दे डायरेक्टली ब्लॉक द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. सेंट्रली एक्टिंग जो है कुछ सीएनए डिप्रेसेंट भी है,
फॉर एग्जाम्पल डायजेपम जो हम लोग आगे देखेंगे, विच इज़ हेल्पफुल इन द सेडेटिव एंड हिप्नोटिक एक्शन। ठीक है, पेरिफेरली एक्टिंग जो है दे हैव नो एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नाउ जो सेंट्रली एक्टिंग है वो ओरली और पेरेंटली भी देते हैं समटाइम्स, बट जो पेरिफेरली एक्टिंग है ये सिर्फ सर्जरी के टाइम पे देते हैं, तो पर्सन में भी अनकॉन्शियस, तो उसको सिर्फ इंट्रावेनस रूट से ही दिया जाता है। इट इज़ यूज इन द क्रॉनिक स्पेजेस्टिक कंडीशंस, अक्यूट मसल स्पाज्म एंड टिटेनस। नाउ एज आई टॉक्ड अबाउट द मसल स्पाज्म एंड स्पेसासिटी, ये दोनों ही कंडीशंस के लिए ट्रीट करते हैं मसल रिलैक्सन। तो ये जो कंडीशंस है ये अक्यूट भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा क्रॉनिक भी हो सकती है, इसीलिए ये ड्रग्स भी दिया जाता है अगर कंडीशन वर्स्ट होती है तो। ठीक है, टेटनस जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से नर्व ब्लॉक हो जाती है, और समटाइम्स ना टेटनस की वजह से बॉडी में पॉइजनिंग स्टार्ट होती है एंड द पर्सन में डाई। यू हैव टेकन टेटनस इंजेक्शन व्हेन यू hit yourself by metal or some other things, okay, so that is relating to that। और जो हमारा पेरिफेरली एक्टिंग होता है ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म होता है, विच इज़ मेजरली यूज्ड फॉर द सर्जिकल ऑपरेशंस। Okay, let's see the classification. Skeletal muscle relaxants are classified as peripherally acting and centrally acting. Peripherally acting are also known as neuromuscular blockers, which are the non-depolarizing, okay, and depolarizing. So neuromuscular blockers are classified as non-depolarizing and depolarizing. Non-depolarizing में you have long acting drugs, intermediate acting drugs and short acting. Okay, this is the mode of action. So long acting में you have D-tubocurane and pancuronium. Intermediate acting where you have ecuronium and your atracurium, and in the short acting में you have mevacurium. Then the second sub classification depolarizing, जिसको हम लोग नॉन कॉम्पिटेटिव भी बोलते हैं, एग्जाम्पल सक्सिनाइल कोलिन एंड डीकैम्थोमेड। स्पाज्मोलाइटिक सेंट्रली एक्टिंग में आता है डाइजेपम, क्लोरोक्साजोन, डाइजाडिनानिन, बैक्लोफिनिन, और डायरेक्टली एक्टिंग में यू हैव द dantrolene. Now let's see about the there is a history behind this agent, जैसे कि in the previous videos, मतलब previous topic में तुम लोगों ने देखा कि there was the word curare. Okay, there was a word curare at the end. Okay, I'll just get you back there. Yes, you can see curarine, curarine, curonium, vecuronium, और क्यूरियम सो और मियम। देखिए, तो ये जो वर्ड्स है दिस हैव अ हिस्ट्री बिहाइंड देम, कि दिस वेयर ये जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स है जिसके एंड में क्यूरेट आया है, तो ये क्यूरेट जो है ये एक जेनेरिक नाम है फॉर सेंट्रल सर्टन प्लांट एक्सट्रैक्ट, जो ना साउथ अमेरिका के ट्राइबल्स यूज़ करते थे एरो पॉइजनिंग गेम्स के लिए। तो क्या होता था, वेन एवर दे यूज टू सी एन एनिमल, they used to just apply that poison to that arrow and they just used to hit that animal। तो जब वो एनिमल को जाके लगता था तो एनिमल यूज टू गेट पैरालाइज्ड, बट एरो से किल नहीं होता था। ठीक है, नेचुरल सोर्सेज इस क्यूरेर के है स्ट्राइकोनस टॉक्सीफेरा, कॉन्डोडेड्रोन टोमेंटोसम, ये जो है इसके बायोलॉजिकल सोर्सेज है जिस विच इज़ रिलेटेड टू प्लांट्स। ठीक है, जिनमें मसल पैरालाइजिंग के एक्टिव प्रिंसिपल्स है सच एज ट्यूबोक्यूरेन एंड टॉक्सीफेरेंस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी वजह से ये जो हमारा फर्स्ट लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है ट्यूबोक्यूरेन वाज क्लिनिकली यूज्ड इन 1930, और बहुत सारे सिंथेटिक कंपाउंड जैसे कि सक्सिनल कोलाइन जो नॉन कॉम्पिटिटिव है वो इंट्रोड्यूस है, और बहुत ज़्यादा रिसर्च अभी भी चालू है इस न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स पे to provide a greater cardiovascular stability during the surgery, and drugs with differing onset and duration of action to suit the specific requirements. Okay, so as I said, we'll be dealing much in detail about the peripherally acting muscle relaxants. So as I said, there are two main classification: neuromuscular blockers and directly acting agents. This was shown in the uh, centrally acting, but it is a part of the peripherally acting. Then it is subclassified as
neuromuscular non-depolarizing blockers and depolarizing blockers. So in non-depolarizing we saw कि teucoboquerine, pancuronium, intermediate acting में vancuronium and atracurium, short acting में mivacurium. Depolarizing blockers में you have succinylcholine, which is also known as suxamethonium and decamethonium. Directly acting में you have dantrolene, sodium and quinine. Now let's study about this in further. Okay, so now we'll study about the non-depolarizing neuromuscular blockers. Mode of action is they block the neuromuscular junction. As I said, they block the neuromuscular junction at the nicotinic muscular receptor. So suppose this is your postsynaptic neuron, presynaptic neuron, and this is your postsynaptic neuron. तो यहाँ पर जो है you have your nicotinic muscular receptors, ठीक है, जिसके वजह से जो भी हमारा वेसिकल से जो भी हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है वो आके डायरेक्टली ब्लॉक कर देते हैं निकोटिनिक मस्कुलर रिसेप्टर को, जिसके वजह से क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इनहिबिट हो जाता है और रिलैक्सेशन होता है. कि यर हैव एक्सप्लेन योर कि यू कैन सी इट इज़ अ रोजेट लाइक स्ट्रक्चर और विच हैज़ टू अल्फा बीटा गामा सब यूनिट्स. एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस इज़ योर मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है. तो जब एसिटाइल कोलिन जो वेसिकल्स में से रिलीज हो रहा है, दिस इज बाइंडिंग टू द this is binding to the binding acetylcholine binding site. तो तब क्या हो रहा है, सोडियम चैनल जो है वो ओपन हो रहा है और सोडियम चैनल ओपन होने की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है और वो सोडियम चैनल की वजह से डीपोलराइजेशन हो रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, फेल इन कॉन्ट्रैक्शन. ओके, एंड दीज आर द ड्रग्स, जिसमें से ये जो है शॉर्ट एक्टिंग है, दीज टू आर intermediate acting and these two are long acting. So we'll study about them. This was the mechanism. Now let's study about the first drug, that is D-cubocurane. Okay, this is a toxic alkaloid which is obtained from the bark of the American plant which we have seen, Condodendron tomentosum, which is having a active basic principles of muscle relaxing property, which was used as an arrow poison. Okay, it binds to the nicotinic as I said ये competitive होता है. तो ये जो ट्यूबोक्यूरेन है, this is the nicotinic receptor at neuromuscular junction. तो ये जो ट्यूबोक्यूरेन है ये जाके यहाँ पर बाइंड हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, ब्लॉक कर रहा है एरिया. तो जो एसिटाइल कोलिन है वो आ नहीं रहा है, उसकी वजह से डीप सोडियम चैनल का इन्फ्लक्स नहीं हो रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज हैपनिंग इज कि इनहिबिट कर रहा है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को. ये अगर ट्यूबोक्यूरिन आएगा तो एसिटाइल कोलिन जो वेसिकल से रिलीज हो रहा है वो यहाँ पर ब्लॉक होने की वजह से वो यहाँ पर बाइंड नहीं हो सकता, डीपोलराइजेशन नहीं होगा. ओके, उसके वजह से क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन इनहिबिट हो जाएगा. अब ये जो है इसके वजह से विदाउट स्टिमुलेटिंग एसिटाइल कोलिन इस कम्पीट करता है, इसलिए इट आर कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव blockers. Antagonism is surmountable. So neostigmin and pyridostigmin जो है ये इस इफेक्ट को रिवर्स कर सकते हैं, दैट इज नॉन कॉम्पिटिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. इंजेक्ट करते हैं आईवी से 0.1 और 0.3 mg. लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन दिखाता है, इसलिए अभी यूज नहीं करते. Let's see about the intermediate acting drug, that is vancuronium. So ये जो एक स्टेरॉइड डेरिवेटिव है जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट को 3 मिनट तक जो है फुल ब्लॉकेट प्रोड्यूस करता है और ये 0.1 mg पर kg लास्ट करता है इन 30 मिनट्स. सो इसके कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट्स नहीं होते और यह हिस्टामिन भी रिलीज नहीं कर सकता. यू कैन सी दिस इज द मार्केटेड प्रोडक्ट ऑफ नेओवैक नाम से है वेकुरोनियम. ओके, it's an injection. Then we have depolarizing, the second sub classification, जो क्या करते हैं, मसल एंड प्लेट को डीपोलराइज करते हैं. वहाँ पर पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन प्रिवेंट हो रहा था, यहाँ पर डीपोलराइजेशन होता है, वो भी प्रोलॉन्ग डीपोलराइजेशन होगा, इसलिए क्या होगा,
पैरालिसिस होता है। ये ओपन चैनल सोडियम चैनल को ओपन करेंगे लॉन्ग पीरियड के लिए और पैरालिसिस होगा। अब जब ये रिसेप्टर को बाइंड हो जाता है ड्रग, जैसे ये एक रिसेप्टर है न्यूरोमस्कुलर, निकोटिनिक मस्कुलर रिसेप्टर है, तो अब यहाँ पर वो जो ड्रग है एसिटाइलकोलिन वो जाके बाइंड हो रहा है, प्रोलॉन्ग डिपोलराइजेशन दिखा रहा है सोडियम चैनल इनफ्लक्स की वजह से, फिर इनएक्टिवेशन हो रहा है सोडियम चैनल का, एसिटाइलकोलिन इज अनएबल टू जनरेट मसल एक्सटेंड पोटेंशियल और उसकी वजह से पैरालिसिस हो रहा है। कि सक्सिनाइलकोलिन इंजेक्शन यू कैन से आईवी इंजेक्शन है ये भी। Okay. Let's see about the succinylcholine. So in the succinylcholine, it is a quaternary ammonium compound which is named as succinylcholine, जिसका structure होता है, you can see there is two structures of acetylcholine. This is a one structure, two structure बनाते हैं acetylcholine का, which is linked together. अब ये इनिशियल फैसिकुलेशंस और लेटर फैसेट पैरालिसिस देता है। सब मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी एट निकोटिनिक रिसेप्टर पे ये पार्शियल एंटागोनिस्ट है। बहुत ज़्यादा मसल एंड प्लेट्स को डिपोलराइज करता है एंड ओपन्स द सोडियम चैनल्स एंड इनिशियली प्रोड्यूसेस द ट्विचिंग एंड फैसिकुलेशन, so it is the depolarizing blockers. Acts as acetylcholine. It is a dual mechanism in many species like dog, rabbit, rat. दो mechanism है, phase 1 and phase 2 mechanisms. Okay. वो जो क्या करता है, इनिशियल डिस्चार्ज प्रोड्यूस करता है ट्रांसिएंट फैसिकुलेशंस में, जो फ्लैसिड पैरालिसिस कॉज करता है, और मेम्ब्रेन रिपोलराइजेस रिसेप्टर को डिसेंसिटाइज करता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन। From succinylcholine we'll see in more detail about phase 1 and phase 2 in the next video. Until then, any doubts please comment down in the comment section. Thank you everyone.